Hello guys, in the last lecture I have told you to solve the quadratic equation by the factorization method. Today I will discuss by the completing square method and by using the quadratic formula. Let us start completing square method. Let us suppose that one example x square plus 3x plus 2 is equal to 0. Okay, here x square then write x. Here the plus, then you write plus. What is the coefficient of x? 3. Then you divide the coefficient of x by 2. Then here becomes 2. Close the bracket, square of it. Then you write minus, means subtract square of 3 by 2 plus 2 is equal to 0. मैं आपको अब फिर से मैं बताता हूँ कि यदि यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x रखो, फिर यहाँ प्लस हो या माइनस हो, यदि प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? आपको ये जज करना है. कोएफिशिएंट ऑफ x कितना? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट x कितना है? 3 है. यहाँ पे 3 है तो 3/2 कर दो. यदि 5 होता तो 5/2 करते, यदि 6 होता 6/2 करते. ये 6/2 का मतलब 3 आ जाता. यहाँ पे 9 होता 9/2 करते. यहाँ पे 9/2 का 2 रख करके होल स्क्वायर कर देंगे और जो यहाँ पे रखेंगे उसी को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी माइनस का साइन हमेशा लगाना. आपको यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे आपको माइनस साइन हमेशा लगाना है. ठीक है, तो 3/2 is here, 3/2 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस कर दो. ठीक, +2 लिखो. हमेशा आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कोई भी क्वेश्चन हो प्रोसेस आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा. कहीं भी कोई भी गलती आपसे नहीं होगी. गलतियों को शॉर्ट मैंने किया है जिससे गलती आपका न हो, एक्यूरेट 100% यानी करेक्ट हो. ये आइडिया आप अप्लाई करोगे तो कहीं भी गलती नहीं होगी. ओके, here becomes x plus 3/2 whole square of it. Here becomes 9/4 plus 2 is equal to 0. यानी here becomes x plus 3/2 whole square of it minus take common 9/4 minus 2 is equal to 0. After that here becomes x plus 3/2 whole square of it. On solving it becomes 1/4 is equal to 0. From here x plus 3/2 whole square of it minus square of 1/2 is equal to 0. Okay, then you are looking in the form of a square minus b square. Then you know the formula a square minus b square equal to a plus b one bracket and a minus b is second bracket. यानी sum of both and difference of both. Here x plus 3/2 plus 1/2 in one bracket and x plus 3/2 minus 1/2 in second bracket is equal to 0. Okay, then it becomes x plus 3/2 and here becomes x plus 1 in one bracket. On solving it x plus here becomes x plus 2 यानी 3 plus 1 divided by 2 and here becomes x plus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to -2 and -1. It is your answer by completing square method. Okay, I am taking next question. Suppose that your equation is in the form of 2x square plus 5x plus 2 okay is equal to 0. Okay, now you are looking here coefficient of x square is 2. Then to form it x square plus bx plus c, यानी आप क्या करनी है जब भी इसमें यानी कोएफिशिएंट ऑफ x का कुछ भी होगा यानी 1 के अलावा तो हमेशा यानी 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो. यदि यहाँ पे 3 है 3 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो आप. क्लियर? यानी इसको आपको रिमूव करना है इसलिए आप डिवाइड कर रहे हो. तो यहाँ पे देखो आप मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन डिवाइडिंग
becomes x square plus 5 by 2 into x plus 1 is equal to 0. Clear? After that, apply the same process what I told you. Here becomes x 5 by 2 divided by 2, it becomes 5 by 4 होल स्क्वायर ऑफ इट. मैंने क्या बोला, यहाँ पे x स्क्वायर मैंने x रखा, यहाँ 5 by 2 कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो 5 by 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 by 4 आ जाएगा. तो इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 5 by 4 हो गया, तो माइनस करके इसका स्क्वायर करना हमको प्लस 1. नाउ this implies that x plus 5 by 4 whole square of it are taking common minus, it becomes 25 upon 16 plus here becomes minus is equal to 0. Okay, यानी x plus 5 by 4 whole square of it minus 25 minus 16 upon 16, it is equal to 0. Then from there x plus 5 by 4 whole square of it minus 25 minus 16 is equal to 9. 9 upon 16 is equal to 0. This implies that x plus 5 by 4 whole square of it minus 3 upon 4 whole square of it is equal to 0. Here the in the form of a square minus b square, applying the formula x plus 5 by 4 plus 3 by 4 in one bracket, in second bracket x plus 5 by 4 minus 3 by 4 is equal to 0. Then on solving it, what is in this, x plus 2 यानी 5 plus 3 यानी 8 divided by 4 is equal to 2, यानी x plus 2 in one bracket, in second bracket x 5 minus 3 is equal to 2 upon 4, here becomes x plus 1 upon 2 is equal to 0. Okay, then here becomes x is equal to minus 2 and minus half. This is your answer. Okay, next your topic is to solve the quadratic equation by using quadratic formula. What is the quadratic formula? By quadratic formula. What is the quadratic formula I'm telling you? Here the ax square plus bx plus c is equal to 0. So how we can determine the value of x by using the quadratic formula? यानी यहाँ से आप सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिलता है फॉर्मूला, यानी x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. Here is the x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This is your formula. You will learn this formula, then you can solve any quadratic equation by using this formula. If you have learned, if you have not learned, then you cannot solve the question. Then this is called the b square minus 4ac is called the discriminant. B square minus 4ac is called the discriminant. Okay, then on taking one example, find the value of x, solve the equation, find the value of x from x square plus 3x plus 2 is equal to 0 by using quadratic equation, quadratic formula. Okay, now yani here is the I retain find the value of x from the equation x square plus 3x plus 2 is equal to 0.
या solve the equation x square plus 3x plus 2 is equal to 0 by using the quadratic formula. So then what is the process to solve it? Now here since x square plus 3x plus 2 is equal to 0, equating this equation by ax square plus bx plus c is equal to 0, then what is this value of a? Value of a becomes 1, value of b is 3, value of c is equal to 2. Okay, then using quadratic formula, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Okay, then minus b at the place of b is 3 plus minus b square, I'm putting the value of b, here becomes 3 square of 3 minus 4, value of a is 1, value of c is 2 upon 2a, and the value of a is 1, then here becomes minus 3 plus minus under root 9 minus 8 upon 2. What is this? Then minus 3 plus minus 1 upon 2. Okay, on taking positive and on taking negative, then on taking positive, then here becomes x equal to minus 3 plus 1 divided by 2, and on taking negative, then x equal to minus 3 minus 1 divided by 2. On solving it, here becomes minus 2 upon 2, and here becomes minus 4 upon 2. Then value of x becomes minus 1 minus 2. This is your answer on using the quadratic formula. तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, यानी सबसे पहले आप लर्न करो फार्मूले को लर्न यदि आप कर पाओगे की रहोगे तभी आप क्वेश्चन का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे. यदि नहीं लर्न है तो आप लीनियर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे. इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न द फार्मूला. ओके, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट को निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल के यहां पुट कर दो वैल्यू, या तो जो एबल है डायरेक्ट यहां पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो. तो वह इस तरह से करें जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल.